मोहन भाई दीपक का बोली। रमेश, दीपक और अनिल। बल्लन ने होगा क्लीन कर दिया।
कोई भी ब्रांड कंपनी है वही आप
म्यूट हो गया। आवाज म्यूट रखिएगा। हेलो 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 हेलो। हेलो 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 चीफ हेलो चीफ हेलो। अरे माइक कर रही सर गाना बहुत काम है। सर हेलो हेलो सर जी सर जी माइक कैसे बंद हो सर जी हेलो कैसे कैसे बंद होगा। हेलो हेलो
सभी लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो।
हेलो हेलो Hello, morning, sir. Can we start now, sir? या श्योर Morning to all the participants. Very warm welcome to today's session, studying cultivation of hummus and cultivations. Myself, Nagaran, consultant, working with managers. Today, I was from Trading Institute, Gorakhpur. Hello. Am I audible? Am I audible, sir? That's it. उधर जाके फोन करते हैं मैं आपको फोन कर रहा था Am I audible, sir? या Yeah, okay. यस ऑडिबल मैडम Okay. I would like to give a brief for museum system. It was started in 2002, launched by the Ministry of Agriculture in order to extend the extension services into the rural areas. The rural unit what way established branches in the rural areas. So here we have a 45-day training program. We provide training program at free of cost through the nodal training institutes that was selected in the states. So after this 45 training period, you will have a facility to buy up to 20 lakhs of year and up to 44% of subsidies. This 45-day training program. On the technique, the video sessions regarding the technical part and the interpersonal skills and the extension skills. Today we have speakers from the NTI Gorakhpur, Dr. Deepak Mahendra Prasad, and two agri-parents who have successfully established their ventures in the category of Goshala on the vermicompost unit. This Gorakhpur is Jubilant Agriculture Rural Development NTI has a great history of training the candidates. Almost 1,253 candidates were trained in 38 training programs, and they have established successful ventures in 694 number, and they are maintaining 54% of the success rate. So now I would introduce the speaker, Dr. Deepak Mahendra Prasad. Sir, it's over to you. Oh, I'll share the presentations. thank you, Nand. Good morning, all. Hello. Good morning, all. I'm Dr. Deepak Mahendra Prasad. कॉल ना करें मेरी मोबाइल कॉल आ रही है कैसे करोगे Opening, we have a center in Gorakhpur. We have started the center in Moradabad in 2010, and after running 3 years, we have in 2013 we got the recognition from Manage to start a new center at Agra. Then we have started in 2013 a center in Agra, and after that in 2014 we have seen that there is a great need in the area of Gorakhpur in the eastern part of the UP, because agriculture graduates are coming here, but they have no jobs and entrepreneurial mindset. Then we request Manage to give us recognition for Gorakhpur. Then we all got the recognition
from Manage in 2014, and we have started first batch in 2014. Till now, in JARS, we have trained 6,785 total number of candidates in JARS. In Muradabad, 3,393, and in Agra, 2,139, and in Gorakhpur, 1,253. Batch is running here in Muradabad and Gorakhpur. Agra, yesterday we have completed the batch. Till now, in Muradabad, we have success 1,930 established candidate there. We have reported till now 1,836, but completed total 1,930 are there. And from Agra, we have established 1,190 candidates. And in Gorakhpur, we have established 694. We have started this journey of JARS. No? JARS recognition, as I tell the directed of 2005, the inception of JARS. JARS we have started in 2005. JARS to promote agriculture in 2003 and rural. Later in 2005, JARS was formed with the motto "Farming for All." And in 2010, we got the recognition from Manage and to start this. In 2015, launched agriculture school on wheels. Launched with the mindset. With the motive to reaching the untapped areas and promoting the extension. And our trained candidates, established candidate to promote their business. And in 2020, we got the recognition from the state government, Director of Agriculture of UP government for training farmers. In 2020, we are working with the state government also to train farmers in new technologies and also to arrange their field visits in our area. On national, in 2023, we got JARS has recognized the national best best training provider for ACABC in JARS. All three center got Best Rural Training Institute award. Next, madam. Yes. Strength our network, strong licensing. Terms of JARS it is the team that makes the difference. Our team is well equipped and well trained. Our team members are here, even from retired government officials and our experienced team is here to serve the trainees. Strong licensing with the external stakeholders. NABARD, various banks, state agriculture department and private companies like John Deere, Indogulf, etc. We have a very good licensing with the companies, and even there during the sessions, our representative from other companies, they came in to take the session, whether online or physically sessions, they organize at our campus. And for an animal Birback company, we have a good relation with them. They also organize sessions for our trained candidate training, pursuing candidates. Successful candidate startups success stories is what people look upon and get motivated. As I earlier told you, that 3,743 total established from the JARS, and from Gorakhpur 694 here. And media coverage, maximum of the channels, they have covered our stories, and newspaper, print media also regularly they covered our stories and of entrepreneurs and our trainings time to time.
this in News 18, News UP, story of agri clinic and agri business run by the media on News 18, and a number of other channels. They also run our time to time. They were trainings and handholding and stories of established our agripreneurs. Next, madam. Achievements, SABC Chart Gorakhpur. Chart Gorakhpur, 10 years we have completed, 1,253 we have trained till now, 694 are the established candidate, success rate at 55%. Number of our bank, our candidates are getting bank loan and subsidies from the NABARD. Till now, among these 694, approx 70 plus our bank loan sanctions are there, and approx 12 to 13% of our successful candidate got the bank loan. We follow up, our follow up with the bank is very positive. We send the pending cases to the NABARD every monthly, though the candidate we with application we have sent to the branches. We send the detail to the NABARD to and they always are ready to help us. We have also good relations with the lead banks, and if any problem we found that we directly contact with the DDM and LDM sir to help our candidate time to time. Next one. Strategy is most important to success any enterprises and establishing the entrepreneurs. Hand-holding to the trained candidates, providing extension services, school on wheels. As hand-holding is very important, training, after training, work starts, because as soon as the trainee starts their business, in the possibilities increases. But as the time passes, the possibility decreases. And after establishing with our school on wheels, we help our candidates to enhance their business and to popularize their business, and we organize field meetings in their area and collect the farmers, and we take the sponsorship from the companies and other organizations for organizing this all. And by this, when we organize meetings of the farmers in our established entrepreneurs, then it increases their business and strengthen them. Linking the trainees with the government scheme. We always try to link our candidate with the government schemes like Atma, NHM, RKVY Raftar, and number of other schemes. We always try to link the trainees with them, and we for this we contact to the Deputy Director Agriculture, Deputy Director Horticulture, and other government officials to engage our trainees in the government sponsored schemes. Seminars in agriculture colleges to encourage the student to become job creator rather than the job seeker. We always organize time to time. We organize the seminars in pursuing student BSc agriculture and other allied subjects to encourage them that you can start your business, and always see that you can help others by starting your business, and become a job creator. The job situation is very poor in our area, and we always try to help and the coming student. By this, we have never faced any scare candidate in our campus. Always 200 or 100 to 200 candidates are remain in waiting, always, whether after the screening or before the screening for a screening purpose. Leadership talks from various industry experts and successful candidate to motivate the youth.
we always try to organize the leadership talks from higher officials of the companies engaged in agriculture businesses like John Deere and few other companies like Shriram Fertilizer, Chamal Fertilizers, and pesticides companies, and even the processing companies. We always organize the talks, and from our large number of successful candidates in all the area. Number of our students are doing agri input, fisheries, poultry, piggery, and different processing units, cold stores, and some other they have. We always to organize a talk. Of our established entrepreneurs with to our pursuing candidate, they motivate to our candidate, and also pursuing candidate of the training, they come to know that how the challenges they have faced and how they overcome to with the challenges, and how they have established the business, and what they have to do and what they have not to do. It helps in establishment of our trained candidates for establishing. Diversifying the venture. It's a very important thing, diversifying, because in agriculture, generally, we have seen in our state that the agriculture graduate come with the motto that he want to start the dairy science or dairy and agri input shop. And because the agri input shop, number of agri input shops are in the area increasing day by day at cost, and the farmer and government and public also wants natural and organic farming organic produce, and because of that, when agri input establishment is not in the future is not a very fruitful business, because of that we always try to start the diversification and trained our candidates, and with this motto that they can do a number of other things. They can help the farmer by establishing warehouses. They can also help the farmers by establishing cold rooms, cold chain, cold stores, and processing units. There is a big scope in the processing of horticulture produce, and also the millets also. The millets, we have also a unit of millets, our own unit, millets. We are producing 31 products of the millets and marketing all this, and also providing the training to our trainees, and how we have started. Then you can start, and sharing the all technologies to with them. Like this, in the big campuses, and from there he is creating a very good business in there, and he purchased the produce of the farmer, and after extraction of oil, and he is selling in the market directly. Like that in dairy, also we have a number of trained candidates, and we also always suggest them to process their produce, because directly if they are selling the milk, it's not a profit units. This on practical knowledge field visits. We always give the emphasis on practical knowledge, because field visits also in the theory is not getting too much from the practical person. If they interact with the practical person and organize the field visit, and he visit the farmers, and even the established entrepreneurs, he come to know number of other things, and he can engage plus his business by doing this all. Now, this is all our strategies by which we are getting good return, and our trainees are getting a very helpful to all the candidates. Next one, please. Next. And yeah, demonstration plots. We have a demonstration plots like room units. This is our rooftop farming construction plots of rooftop farming, and anyone can start in the roof if they have a
they can take the roof of the big hospitals, big colleges, big industries. The roof is spared there, and without any disturbance, they can start their rooftop farming and organic farming, and they can sell the vegetable in the market and get the good profit. Farm machinery, like we have provide the training to the in practical training with the farm machineries. We have all that machinery and practical trainings. The John Deere companies, technical persons, and they come to our campus and provide training to our uh, pursuing candidates. This is the chaff cutter, mushroom, also cultivation, mushroom practical training to the mushroom grower for mushroom, how they can grow, and also the processing of the mushroom. Our one trainee is doing very good in mushroom. He's practical and he's processing the mushroom and he's making the biscuits of the mushroom, mushroom powder, mushroom pickle, mushroom ice cream. Number of products he is doing in mushroom, and for the training person, training purpose, we invite him to provide the training at our campus to our pursuing candidates. If he don't get the time, then virtually he connect with our trainees and provide them the technology and how they can start the mushroom business. Because of that, number of our trainees are coming in this business also. Next one. Yes, this is our school on wheels, and we provide the trainings in the field, in the area of our established entrepreneurs, then how they can increase the business and inform to the farmers that the farmers come to know that this is a established person and this is a trained person and trained under the scheme of the government of India and the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare, and he knows all the things, and professionally he has taken the training of 45 days under the leadership of the manager, and he knows all the things, and farmers need to go to these established clinics always. A hydroponic unit is there to provide the practical training. Cow-based products, dairy, small dairy farm is here, in which we have an Indian breeds cow, A2 milk, the differentiate between A1 and A2 milk, then how they can produce and they can market the A2 milk by branding the and A2 milk product, A2 milk products like ghee and other products of the milk. They can market how. We always train to them. Biogas plant is there, and herbal garden, in herbal garden organic crops and medicinal crops is there, and how they can cultivate and how they can processes this all the things, no? Medicinal and aromatic plants. Next, madam. This is our solar power cold storage. This is a mobile storage, mobile cold store, and we can move it to from one place to another place. And solar panels are there. Cold storage, moving cold storage. Because as the whenever we have seen here in our area, the vegetable crops comes in the June, in the mid of June, when the temperature is very high and farmer is compelled to sell his crop of tomato in at the rate of 2 rupees per kg, and he's not getting the value, and he's not getting that even the transportation cost. And by this mobile cold storage, our trainees can help him to take their product produce from their field. No, then transportation cost decreases, and he can earn, and even farmer can keep their produce in our this cold storage. After 1.5 months, the prices come to 40 to 50 rupees, and by this, in 2 months, he can even the farmer, if with the share of our agripreneur, both have the win-win situation, both earn this by this.
And some other things are there in even other commodities like apple in November or December, apple's rate come to 40 or 50 rupees per kg, and after in February, March, it comes to 100 plus 120, 130, and after in within a 2-3 months, the prices of the apple increases to a double. And by this purchasing from the farmers, or even he can keep the farmer produce on the rental basis, on the sharing basis, on in this cold storage. And because this no running cost is there, so because it runs with the solar panels, and farmers and our entrepreneurs both can earn by this. Next one. Dignitaries, time to time, dignitaries visit our Jhat center. Our governor, state governor, Shrimati Anandiben Patel also visit our center. CGM Nabad, Shankare Pandit also visit our center. Mr. Avnish Kumar, IAS Special Secretary, Nagar Vikas, UP government visit our center. And number of other dignitaries, this is Director, Dr. AP Srivastav, Director Agriculture, UP visit our center. Mr. A.K. Vishnoi, Joint Director Agriculture, Quality Control, UP, visit our center. Dr. O.P. Singh, Deputy Director Agriculture, this visit our center. Some other dignitaries time to time visit our Pride of the City Award from NYK Ministry of Youth and Youth Affairs and Sports. We got this award. And even Honorable Shri Radha Mohan Singh Ji, ex-Union Minister, Agriculture Minister, honored us running excellent center under Pandit Deen Dayal Upadhyay Unnat Krishi Shiksha Yojana on cow-based farming. He honored us in Bihar. Next, madam. Visit of dignitaries next. This is all from our JARS because in Gorakhpur we are working from our 14 years, approx 14-year journey in ACABC. In both the in all three centers, we are doing and trying to improve our training and diversifying the units, because only 2 units, dairy and agri input, is not sufficient. Number of our entrepreneurs are doing custom hiring as the land is decreasing by day, the farmer land holding, and it's not farmer is not able to keep the machinery all with him, and there is a good chance to start in custom hiring business. Number of our trainees have started their business in custom hiring area, and they are getting very good amount, and also helping the farmers, and farmers are also getting the machinery, even the small machinery. They are providing new machineries are coming to help the farmers, and always our trainees are doing good with the farmers, and they are, because they are all technical persons, they provide, and good technology is also them, and number of other business doors we can start, and to our entrepreneurs, we remain, our one team remains always in looking for that what the new venture can introduce to our trainees. By this searching this even in the country, different parts of the country, and even outside of the country, what different ideas, and we can share with our trainees to improve and strengthen their business. This is all from JARS, and our trainees are here. Lakshmikant Srivastav is here. Madam, if anybody want to question me, or after the session, we can. Hello. Hello.
Madam, this is all start and hello. Hello. Yes, madam. This is all. One state that trainings are there and PPT continuation with my dairy. So now, in the run the PPT. Yes. Yes. नमस्कार। मेरा नाम लक्ष्मीकांत श्रीवास्तव है। मैंने जुलाई अगस्त में यहाँ पे 45 दिन की यार्ड्स में ट्रेडिंग करके डेयरी का व्यवसाय शुरू किया। मेरा लोन जो है वो यूपी बड़ौदा बैंक से हुआ था। यूपी बड़ौदा बैंक से लोन लेके मैंने 12 गायों के साथ अपना डेयरी का व्यवसाय शुरू किया और इस समय हमारा लगभग 70 से 80 लीटर पर डे दूध का उत्पादन हो रहा है। और इसके साथ साथ जो गाय के गोबर से हमने वर्मी कंपोस्ट का यूनिट शुरू किया है। वर्मी कंपोस्ट की यूनिट के साथ साथ हमने उपले बनाने का भी काम शुरू किया है। उपलों का हमारा बनाने का कास्ट आ रहा था लगभग 70 से 80 पैसे पर उपला और शहर में ये 10 से 15 रुपए में बिक रहा है। और मैंने जल्दी देखा है अमेजन वगैरह पे तो 60 रुपए में 50 रुपए में एक उपला बिक रहा। तो दूध के उत्पादन के साथ साथ मेरे ये 2 एक्स्ट्रा अर्निंग के रास्ते खुल गए, जिसमें उपले बनाना और वर्मी कंपोस्ट बनाना, ये दोनों व्यवसाय एक साथ चल रहे हैं। हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो हमारा चारा है, दाना है, इसकी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। उस रेशियो में दूध की कीमतें नहीं बढ़ रही हैं। जब हमने डेयरी शुरू किया था उस समय चोकर ये आता था 910-920 रुपए। इस समय चोकर की कीमत 1200 रुपए पर बोरी है। इसके साथ साथ और भी जो दाने सप्लीमेंट और जो सपोर्टिंग में जो दाने दिए जाते हैं जैसे मिनरल मिक्सचर्स हुआ, इन सब की कीमतें जिस रेशियो से बढ़ रही हैं उस रेशियो से हमारा दूध की कीमतें नहीं बढ़ पाती हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। एक चैलेंज और आ रहा है कि जो हमारी HF नस्ल की गाय हैं वो यहाँ के एटमॉस्फेयर से एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। हमने लाखों को कूलर लगवाया, पंखा लगवाया, पानी का फुहारा दे रहे हैं, फिर भी उनके हेल्थ संबंधी समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मतलब ये कहा जा सके कि एक बड़ा हिस्सा हमारे लाभ का उनके स्वास्थ्य पे खर्च हो रहा है। ये हमारे सामने चैलेंजेस है। नेक्स्ट। हेलो। हेलो। हमारी आगे की योजना है कि हम अपने दूध को डायरेक्ट ना सेल करके उसका वैल्यू एडिशन करके हम बेचेंगे। और कंपोस्ट तो हमारा चल रहा है, वो जैविक किसानों को देंगे। और जो हमारा कंपोस्ट का उत्पादन है इसको हम जैविक कृषि जो हमारे किसान कर रहे हैं उनको बेचेंगे।
और जो हमारी गाय हैं और उनके नस्ल में सुधार करने की हमारी योजना है कि कुछ ऐसी गाय लाएं जो यहाँ के जो एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर है, उसको एडजस्ट कर सके और उनका दूध का उत्पादन ना घटे। नेक्स्ट। और कोई सवाल में कुछ जानना चाहते हैं? Managing initial step, sector for cost, managing moisture and temperature, market demand and limited awareness. मार्केट में डिमांड बहुत है, अवेयरनेस की कमी है। A to मिल्क के बाद बताओ, मार्केट में लोगों को A to मिल्क के बारे में अवेयरनेस नहीं है, इसलिए पैसा अच्छा नहीं मिल पाता। अगर हम जैसे हमारे पास में जो गिर नस्ल की और साहिवाल नस्ल की 2-3 गायें हैं, उनके भी दूध का कीमत हमको सेम जो बाकी HF नस्ल की दूध जाता है उसी रेट पे। लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि गिर का जो दूध है उसमें क्या मेडिसिनल क्वालिटी है, हेल्थ के लोगों में अवेयरनेस की कमी है। इस वजह से हमारे दूध का सही कीमत नहीं मिल पा रहा है। अवेयर करना, पॉपुलेट लोगों को बताते और लोगों का अवेयर किया जा रहा है, पंपलेट बांटा जा रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को बताया जा रहा है कि A2 मिल्क में क्या क्या फायदे हैं, उन सब दूधों से नॉर्मल दूध से कितना बेटर है और क्यों इसका जो हम लोग रेट है वो अधिक। इस समय हमारा गिर गाय का दूध लगभग 150 से 160 रुपये लीटर हम बेच रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरा दूध हमारा नहीं बिक पा रहा। थैंक यू। नेक्स्ट मैम, मैम सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जाट्स गोरखपुर का। मैंने जाट्स गोरखपुर के थ्रू मैंने एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस के थ्रू मैंने वो एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस के तहत मैंने 45 दिन की जाट्स गोरखपुर में ट्रेनिंग लेके वर्मी कंपोस्ट अपने चुने हुए व्यवसाय वर्मी कंपोस्ट का मैंने काम शुरू किया था। लगभग वर्मी कंपोस्ट का काम लगभग 14 महीने सफलतापूर्वक हमने मतलब कर रहा हूँ। तो मैंने शुरुआत में लगभग 4 बेड से स्टार्ट किया था, 4 से उसको 8 किया, 8 से 16 किया, 16 से 32 बेड पे मेरा काम चल रहा है। आगे 32 से लगभग 60-62 बेड पे हमारा काम होगा नेक्स्ट मंथ से। इसमें काफ़ी चैलेंजेस आए थे। शुरुआत में हमारी सेल्स बहुत कम थी। हमने लोकल फार्मर्स से सुबह निकल जाते थे, लोकल फार्मर्स को समझाते थे कि आप ऑर्गेनिक पे आइए, आप जो रासायनिक यूज़ करते हैं इससे आपकी मृदा संरचना का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, उसमें फसल पे बुरा प्रभाव पड़ता है। धीमे धीमे हमारी मृदा की उर्वरता क्षमता घटती है, आप जैविक पे आइए। शुरुआत में हमने इनकी है। अच्छा। शुरुआत में हमने फ्री में लोग फार्मर को मतलब खाद दिया कि आप डालिए, देखिए कैसा रिस्पांस है। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। काफ़ी हमारे लगभग 70 से 80% हमारी नर्सरी पे जाता है खाद, लगभग 20% लोग फार्मर लेके जाते हैं। हमारा जो एरिया था हमने सेलेक्ट किया कि जहाँ सबसे ज़्यादा है वहाँ पे मैंने यूनिट इस्टेब्लिश करी। काफ़ी मतलब चैलेंजेस आए थे, लोगों को समझाना बताना कि आप ऑर्गेनिक पे आइए, रसायन को धीमे धीमे छोड़िए, हमारे बुरा हमारी सॉइल पे हमारी हेल्थ पे बुरा प्रभाव पड़ता है। इसमें लगभग इनिशियल अगर सेटअप का कॉस्ट करें, लगभग ये 4 बेड से जब मैंने स्टार्ट किया था लगभग ये 1,76,000 की हमारी कॉस्ट आई थी। मैनेजमेंट अगर इसका देखा जाए, इसमें क्या होता है कि बेड को लगाने के बाद उस पर
पहले गोबर लाते हैं, गोबर को पहले लाके ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के बाद बेड पे गोबर को डाला जाता है, ऊपर से केचुआ छोड़ा जाता है। उसके बाद हमें निरंतर उसमें नमी लगभग 30 से 40% नमी हमको हमेशा उसमें बनाना पड़ता है। अधिक नमी हो जाने से केचुए ठीक तरह से काम में नहीं करते हैं। इसमें मार्केट डिमांड की अगर बात करें, मार्केट डिमांड में अच्छी खासी सेल्स थी। मैंने 4 बेड से स्टार्ट किया था, लगभग मेरा 2.4 टन का प्रोडक्शन हुआ था। मेरे सारे कंपोस्ट मेरे सेल हो गए थे। थोड़ा मतलब दिक्कत हुई थी, लेकिन हिम्मत नहीं हारा, आगे भी संपर्क किया। एक लोग छोड़े तो दूसरे के पास गए, दूसरा छोड़ा तीसरे के पास गए, कोशिश बहुत की, मार्केटिंग बहुत करी। अब कुछ अच्छे स्केल पे काम चालू है। लगभग कहीं मेरा मतलब 1 टन का प्रोडक्शन था, आज लगभग 4 टन प्रति मंथ का हमारा प्रोडक्शन है। हमारे साले जितने भी खाद हैं सारे सेल्स हो जाते हैं, सेल्स में कोई दिक्कत नहीं है हमारी। प्लस हमने अब जैसे जैसे मैंने यूनिट को बढ़ाया, तो मैंने अभी अपना अयोध्या का रहने वाला हूँ, तो अयोध्या पूरा कवर किया। अयोध्या के आसपास डिस्ट्रिक्ट थे, वहाँ पे हमने मार्केटिंग की। वहाँ पे हमारी सेल्स अच्छी खासी हुई थी। इधर अकबरपुर में हमारी सप्लाई चली गई पूरी, इधर बाराबंकी जा रही है। अब हमें लखनऊ का पकड़ना है, लखनऊ का टारगेट है हमारा। लगभग सर हमने 2 मंडल कवर कर, 1 मंडल तो पूरा हमने अयोध्या का कवर कर लिया अपना। और आगे मैम जो आगे इसको और भी बड़े स्केल पे हमको लेके जाना है। इसमें स्ट्रेटजी क्या थी, टारगेट आउटपुट ऑर्गेनिक। सीधा शुरुआत में हमने हमारे ब्लॉक के जो एडीओ होते हैं, उन्होंने हमारी काफ़ी मदद की। हमने उनके थ्रू पूछा कि आपके जानकारी में कौन से फार्मर्स होते हैं जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं, उनसे संपर्क किया, इसके बेनिफिट बताए। मैंने ये भी बताया कि मैंने ग्रेजुएट हूँ, मैं ये सब काम मतलब पढ़ाई नौकरी छोड़ के ये काम कर रहा हूँ। तो काफ़ी मतलब चैलेंजेस थे। स्ट्रेटेजी हमारी यही थी कि शुरुआत में हमने लोगों को खाद फ्री में दिया, 1-2 बोरी, 3-3 बोरी। कोई अगर बेल की सब्जी लगा रहा है, मतलब बेल वाली सब्जी लगा रहा है या भिंडी लगा रहा है, जितनी भी सब्जी वाली खेती थी उसमें हमने पहले फ्री ऑफ कॉस्ट लोग फार्मर को हमने दिया। मैंने कहा कि आप पहले डाल के देखिए, आपको अच्छा रिस्पॉन्स लगे तो हमसे लीजिएगा। तो मैंने 1-2 फार्मर्स को दिया, तो उन्होंने मतलब फीडबैक बहुत अच्छा दिया कि हमारा लगभग जो हम रासायनिक से मतलब प्रोडक्शन लेते थे, ऑर्गेनिक में लगभग हमारा 30 से 40% बढ़ा है। तो बराबर हमारे पास फार्मर्स रिपीट होते रहते हैं। इस समय लगभग लगभग हमने बरसात के सीजन में लगभग 6.4 टन का हमने स्टोरेज किया था। लगभग हमारा पूरा माल लगभग 30-35 दिन के अंदर में पूरा सेल हो गया था। अभी भी हमारे पास इतनी लगभग 3 से 4 टन की डिमांड है, लेकिन मेरे पास प्रोडक्शन नहीं है। प्रोडक्शन हमको बढ़ाना है। Yes. तो मैम इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अगर कोई युवा जुड़ना चाहता है, तो हमने अभी अयोध्या में एक और यूनिट इस्टेब्लिश कराई है। तो फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है। अगर कोई यूथ अगर आता है यहाँ पे काम करता है, तो मार्केट आगे बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा मार्केट इसका। आगे काम इस पे जारी रहेगा। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा रंजीत सर को कि हमको इतने बच्चों के बीच में हमको कुछ बोलने का मौका दिया है। दीपक सर का बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हम। तो कोई क्वेश्चन किसी इस गर्मी से रिलेटेड या जैविक खाद से रिलेटेड कोई पूछना चाहता है तो बता दीजिए, उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। Thank you. कितने दिन में हार्वेस्ट करते हो? जी मैम। महीने में कितने बार हार्वेस्ट करते हो वर्मी कंपोस्ट? हार्वेस्ट मैम हार्वेस्ट मैम देखिए, इसका डिफरेंट प्रोसेस है। लगभग खाद में केचुए छोड़ने के बाद लगभग 21 दिन में हर 2-3 इंच लेयर बन जाती है। कोई लेयर वाइज निकालता है, कोई 90 दिन के साइकिल पूरा कंप्लीट करके निकालता है। हम लोग लेयर वाइज करते हैं, क्या कि जितना लेयर हम निकालते जाएंगे, केचुए में खाद बनाने की प्रवृत्ति और बढ़ जाती है, इसमें एयर लेयरेशन बढ़ जाती है। तो मेरा यही मेथड है मैम, जैसे 21 दिन में बना हम उतार लेते हैं, जो डिमांड होता है जहाँ पे हमको देना होता है वहाँ पे हम भेज देते हैं। प्लस मैम ये मेरा 1 केजी, 5 केजी, 10 केजी, 20 केजी, 25 केजी, 40 केजी में सेल है। तो हमारी 1 केजी की पैकेट जाती है लगभग 20 से 22 रुपए में जाती है। 10 रुपए से लेके 20 से 22 रुपए में जाती है। 5 केजी की 100 में जाती है, जो 40 किलो की 400 रुपए में जाती है। जी मैम। अमेज़न फ्लिपकार्ट में मैम उसके लिए लगभग उसमें जीएसटी होना जरूरी है, काफी उसमें डॉक्यूमेंट्स। फिलहाल हाँ मैम, आगे फ्यूचर
डालेंगे, करेंगे जरूर। अभी लगभग मैम 14 महीने हुआ, अब धीमे धीमे आगे और बढ़ाएंगे, इसमें काम चलेगा। Points for that. Venture establishing candidate. सही है। Water shot. Establishing. ये क्या टिकट Sir? Hello? Hello? Yes, madam? I can hear you, sir. Can you hear? Hello? Hello. Yes, madam? Can you hear me, sir? आवाज आ रही है? इधर इसे ऊपर करना, अभी एक सेट किया है। Hello? Hello. Yes, madam? Can you hear me, sir? Yeah, yes. Thank you for the presentation. Oh, oh, no. Focusing on need-based, It's the best. area-specific ventures. And, We are also thankful to you and the management that given the opportunity to connect with all the trainings and thanks a lot, madam. Very nice shared that you have shared the presentation. Sure, thank Any questions from the participants? you. Hello? Sir, hello. Any questions from the participants? No. सही है, वो सही है। हेल्प पर्सन है मैंने तो क्या Sign. Giving it up. Even children give it then. I think no question is there. You want to ask any question? Come away. No, madam. I thank the three vendors who are successful historians, the and his talents. And all challenges. The programs and now in future. In the rich possibilist for future leaders, whatever it is, marketing strategies. In the meanwhile, I'm with that's that India is and still upper wisdom of other venture. Strategies. पुराना दोनों फाइल डिलीट कर देने का Sure. Today's इसलिए वो ओपन हो रहा the type of participants that are doing this session. That are questions from the participants. We shall wind up session. So I think there are more questions from the participants. Can we wind up? Sure, madam. Sure. Thank you all. Thank you very much.